Very good morning to every one of you. I hope everyone is having a fabulous morning over here. Right, so this would be my very initial motor vlogging video. Well, you might be thinking right now that Mangaldeep is a trader and why is he into motor vlogging? Well, the thought came in when I saw that there is nobody on YouTube who is a trader and a motor vlogger as well. So मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए. Let's do something different from the regular stuff. So that is when I decided to go ahead and give it a try. Try करने में क्या जाता है. So it will be like okay, let me also explain that I will be making the video, the vlogging video in both English and Hindi. So that is how I talk most of the time. So let's keep it that way, and I hope the reason I'm doing it is because most of the time I get requests to make the videos in Hindi, which I'm not able to do. तो इस तरह से मैं हिंदी में भी बात कर लूँगा और जो बंदे इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं उन लोग को भी समझ में आ जाएगा. So that's where I'm coming from. So that was the thought initially, that there is nobody on YouTube जो कि trader भी हो और motor vlogger भी हो. So want to try something different than the regular stuff. So वो था पहला रीज़न. दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग को कुछ चेंज भी मिल जाएगा. चेंज इन द सेंस वही हम लोग नॉर्मली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वही शॉर्ट्स, वही एक्सप्लेनेशंस और वही सब करते रहते हैं डे इन एंड डे आउट. सो अगर मैं मोटर व्लॉगिंग करूँगा एंड इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग, it will be a bit different, it will be a change as well. तो हम लोग को कुछ चेंज भी मिल जाएगा और जिस जगह से मैं जा भी रहा हूँ वो सब भी आपको एक्सप्लेन कर लूँगा. क्योंकि जो बंदे बैंगलोर से नहीं हैं उन लोग को बैंगलोर भी देखने मिल जाएगा. एंड गाइज हु आर फ्रॉम बैंगलोर एज वेल, इट डजंट मीन दैट दे हैव सीन ऑल द पार्ट्स ऑफ बैंगलोर. So they will also get a chance to see into the see into the places where I travel. So that was the second thought. Okay, so the perspective, coming to the point, how I'm planning to do it is, let's say for example I'm getting ready for office, right? So I'm traveling for office right now. Every one of us, we know that I'm not a full-time trader and I am a guy who is having a job as well. So it normally takes me 30 to 45 minutes to reach the office, right? So why to waste that time? I can have a talk with you guys while I'm traveling, and I'm very sure कि कहीं ना कहीं आपको उससे मिल जाएगा. So we will be talking about trading while I am riding my bike, and that should be fruitful to some of the guys over here, right? So वही thought process है. And let me take the opportunity to introduce the new member of my family, the bike that I'm riding. The bike that I'm riding, it is a super bike, Kawasaki Ninja 650 it is, and it has been a month that I have bought it, and everything is good enough. It's a beast. I mean, a lot of power, a lot of speed. Sometimes it becomes hectic to go ahead and ride it in the Bangalore traffic. अब देखिए आगे ये गाड़ी कैसा पार्क किया हुआ है. भाई साहब ऑफिस जाने का वक्त हो रहा है, आप लेट करा रहे हो सबको. Anyways, these kind of stuffs keep happening in Bangalore, and the sad part is we really cannot help it. You tell them something and they will start quarreling with you. So कुछ कर नहीं सकते इस केस में. So better to थोड़ा सा साइड लगा के निकल जाओ भाई. Okay. Right. So this is the Brookfield area, guys. And after traveling around half or 1 kilometer from here, we will enter the Whitefield area. So right now I'm coming from Marthahalli. I took a left diversion towards Brookfield, and I will be getting into the Whitefield area in a bit. So you'll get to see a lot of buses, बहुत सारे buses, बहुत सारे cabs, बहुत सारे लोग
they are getting on to their office. A lot of busy people in Bangalore. Everybody is busy in doing something or the other. So यही लाइफ है बैंगलोर का और यही ट्रैफिक भी है. So yeah, that was the whole purpose of making the vlogging video here. So जब भी मैं कहीं travel भी करूँगा, not only to the office, if I go out somewhere for a short trip or a long trip, I will go ahead and make the video and share it out on YouTube. And by the time while I'm traveling, I can talk about some of the topics in trading that might be helpful to you. Small topics, okay, but the very basic ones, like how do I take up the trades, okay, and what all things that a trader should be following, a good trader should be following, and stuff like that. Okay, so अभी के लिए ये करते हैं कि let's talk about how I start my day and what exactly do I do at the starting of the day. So normally I get up in the morning by 6:45 or 7. Okay, I get ready. It takes me around 30 to 35 minutes to get ready for the office, and this is the exact route that I take to reach my office. My office is in Whitefield, so I have to take this route. There's another route from the inside, like अंदर से और एक रास्ता जाता है, but वो रास्ता जो है मतलब बहुत उबड़ खाबड़ है, मतलब इतना प्लेन नहीं है. The roads are not good over there, so that is the reason I choose to go through here. तो इसी रास्ते से ऑफिस जाता हूँ मैं. It takes me around half an hour to 30 to 40 minutes to reach the office. तो अभी मैं उसी रास्ते से ही जा रहा हूँ. So once I reach my office, I do the regular stuff, meet friends over there, see what are the plans for the day, what are the escalations, and so many other stuffs that I do there. Okay, अभी अगर trading की बात करें, the market opens at 9 o'clock, right? So 9 to 9:08 a.m. is the pre-market, and from 9:15 onwards we are allowed to trade, right? तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि आई रियली डोंट वॉच आउट द मार्केट बिफोर 9:15. ओके, मैं 9:15 तक मार्केट को देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है. प्री मार्केट में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे आप हिंट ले सकते हो कि जब मार्केट ओपन होगा 9:15 में आपको क्या करना है. ओके, बिकॉज थिंग्स, it doesn't even take seconds for the things to change when the market open. Okay, like for example 9 to 9:08 में आप अगर देख रहे होगे कि एक पर्टिकुलर स्टॉक टॉप गेनर्स में है या फिर टॉप लूजर्स में है, it does not mean that when the market opens up at 9:15 सेम चीज़ या फिर सेम स्टॉक टॉप लूजर्स और टॉप गेनर्स में रहेगा. ओके, द थिंग्स रियली चेंज real fast when the market opens up. Okay, so I don't see a point in watching out the market before it actually opens up. Okay, so 9:15 को market open होता है till 9:30 or 9:40. I don't even bother about the market. Once the market stabilizes, that is when I start looking at it. Okay, every single day it's the same story. You have to make some rules for yourself and you need to stick to the rules no matter what. Okay, अगर आपने सोचा है कि 9:40 को ही मैं मार्केट देखना चालू करूँगा या फिर 9:30 के बाद ही मैं मार्केट को देखना चालू करूँगा, तो आपको वो रूल मानना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि बेस्ड ऑन सम सॉलिड assumptions, not assumptions, based on some solid facts you make the rules, right? Like मैं अगर अपने बारे में बात करूँ, the reason why I don't see the market till 9:30 or 9:40 is because every single day the market will be volatile for these first 15 to 20 minutes, right? तो अगर मैं कोई भी पोजीशन लेता हूँ 9:30 या 9:40 से पहले, I know it very well कि हो सकता है कि ये रिवर्स मार जाए, राइट? अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि वो नीचे आना चालू कर दे, या फिर कोई स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि वो ऊपर जाना चालू कर दे. तो वाई टू टेक रिस्क? देयर इज़ नो पॉइंट इन टेकिंग एनी रिस्क इन दैट. ओके, सो डिफाइन द रूल्स फॉर योरसेल्फ एज पर मी. मैंने अपना स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ है कि 9:30 या 9:35 या 9:40 से पहले मैं कोई भी ट्रेड नहीं दूंगा और कोई भी कॉल्स भी नहीं दूंगा. ओके, इट्स क्वाइट रेयर दैट आई गिव आउट कॉल्स बिफोर 9:30, राइट? You can check out in my Telegram channel as well.
सो यही है कि ऑफिस में भी मैं यही करता हूँ. आई स्टार्ट रैपिंग अप माई वर्क, आई स्टार्ट डूइंग माई वर्क, और जब 9:30 या 9:40 होता है, दैट इज़ व्हेन आई स्टार्ट लुकिंग एट द मार्केट. एंड बहुत लोग ये पूछते हैं कि आप ऑफिस लैपटॉप या ऑफिस कंप्यूटर में कैसे ये काम करते हो. तो एक बात आप लोगों को जानना पड़ेगा कि जो भी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, या मतलब मैं तो बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, राइट. मैं बंदों को कॉल देता हूँ, प्रीमियम इक्विटी चैनल में कॉल देता हूँ, मैं खुद ट्रेड्स करता हूँ, मेरे बहुत सारे ट्रेनीज़ हैं जो लोग मुझे डाउट पूछते रहते हैं. मार्केट आवर्स में भी उन लोग को भी मैं सजेस्ट करता हूँ. ऑफिस के काम रहते हैं, मेल्स भेजना रहता है, काम ख़त्म करना रहता है, मीटिंग्स रहते हैं बहुत बार, वो सब अटेंड करना रहता है. तो ये सारी चीज़ें एक साथ करता हूँ मैं, ठीक है. और आई नेवर यूज़ दिस इज़ स्पेशली फॉर द ऑफिस गोअर्स, आई नेवर यूज़ द ऑफिस नेटवर्क फॉर दिस. जो भी काम मैं करता हूँ इन रिगार्ड्स टू ट्रेडिंग, इट्स एब्सोल्युटली फ्रॉम माई मोबाइल फ़ोन, ठीक है. मोबाइल फ़ोन पे ही मैं सब कुछ करता हूँ. कॉल्स भी मोबाइल फ़ोन से दिया जाता है, डाउट्स भी मोबाइल फ़ोन पे ही क्लियर किया जाता है, और मेरे ट्रेड्स भी मोबाइल फ़ोन से ही लिया जाता है. टेक्निकल एनालिसिस भी मोबाइल फ़ोन से ही करता हूँ मैं, ओके. सो आई वुड से 99.9% ऑफ द जॉब which I do in regards to trading is done from my mobile phone. Right, let's zoom it here just for fun. Alrighty buddy. Okay, so right now I'm not allowed to exceed the speed of 80 because अभी तक मेरे बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग भी नहीं हुआ है. It's like a month. It has been a month, 29 or 28 days that I have taken up the mic. So the servicing is pending on this weekend, right? So I'm not allowed to exceed the speed limit of 80. But बहुत मुश्किल होता है. I mean, when you are riding a super, it's very difficult to control yourself, क्योंकि आप थोड़ा सा भी एक्सीलेटर दबाते हो तो it will catch the speed of 100. Okay. So but anyways, you have to follow the rules again. इसमें भी रूल्स आ जाते हैं, तो वो हमारे बाइक के लिए ही अच्छा है. इनिशियल फर्स्ट सर्विसिंग से पहले स्पीड लिमिट्स कंट्रोल में रखने चाहिए, क्योंकि द इंजन गेट यूज्ड टू द फ्यूल कंजप्शन. और अगर आप ये नहीं मानोगे देन फ्यूचर में आपका बाइक बहुत तेल खाएगा, ठीक है. सो इट्स बेटर टू कंट्रोल फॉर अ मंथ एंड देन यू कैन जूम इन, यू कैन throttle, do whatever you want to do. Okay, so that was about the bike. So this area is right field area, as you can see here. The metro construction is going on. On the left hand side we have the SAP labs, that is one of the landmarks over here. अगर आपको वाइट फील्ड आना है तो आप किसी भी ऑटो वाले या कैब वाले को बोल सकते हो कि सैप लैब्स के पास जाना है. सो एवरीबडी नोज दिस एरिया वेरी वेल. वन ऑफ द मेजर IT हब्स इट इज़. बहुत सारे MNCs यहाँ पे हैं वाइट फील्ड में. सो आई एम ऑल्सो वर्किंग हियर सिंस द लास्ट 5 to 6 years. So this is the regular way that I take every single day. Okay, so back to the trading discussion. तो मैं क्या बोल रहा था? Yeah, so 99.9% of the time I do all the work from my mobile phone. See, the thing is, अगर आप कुछ करना चाहते हो और अगर आप वो, if you're doing it newly, okay, it will take some time for you to go ahead and get used to it. Okay, मुझे बहुत सारी क्वेरी आते हैं कि सर आप मोबाइल फ़ोन से ही क्यों करते हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो. वैसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं. बट द थिंग इज़, आई डोंट लाइक यूजिंग द ऑफिस नेटवर्क. इट्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ द इंटीग्रिटी, राइट. So integrity front पे majorly I do all my trading stuffs from my mobile phone and I have got used to it as well. तो अगर आप भी नए हो और आप भी मतलब मोबाइल फ़ोन यूज़ करके ट्रेडिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता है आपको, तो आप कीजिए. आपको वो चीज़ करना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू गेट यूज्ड टू इट, इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर थिंग टू वर्क फॉर यू ऑन ए लॉन्गर टाइम फ्रेम, देन आपको वो काम करना ही पड़ेगा, राइट. जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग, अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको मैदान में उतरना ही पड़ेगा, आपको ट्रेड लेने ही पड़ेंगे, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा, ठीक है.
तो वही है कि अगर आपको कुछ करना है और आप चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम बेनिफिट हो उसका, तो आपको वो चीज़ करना ही पड़ेगा। दैट इज़ मैंडेटरी। ओके, आप डर के पीछे बैठ नहीं सकते, आप सिर्फ सोच के कुछ कर नहीं सकते। ओके, थिंकिंग डजंट वर्क, यू कांट इवन होप फॉर थिंग्स टू गेट वेल। ओके, यू हैव टू गेट डाउन टू द ग्राउंड एंड यू नीड टू डू दो स्टफ्स। ओके, तो अगेन जस्ट टू रिपीट, अगर आप कोई बंदे हो जो मोबाइल में कंफर्टेबल नहीं है और ऑफिस गोअर है, तो आप मोबाइल में काम करना शुरू करो एंड ट्रस्ट मी, यू विल गेट यूज्ड टू इट। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजकल स्मार्टफोन्स यूज़ करके ट्रेडिंग करना, यू विल गेट यूज्ड टू मल्टीटास्किंग। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। Right, so I'm approaching my office right now. All around the metro construction is going on. So बहुत ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अभी तो मॉर्निंग के 8:18 हो रहा है, it's 8:18 AM right now. So the traffic is not yet filled in till now. But और आधे घंटे या फिर 20 मिनट बाद this area will be full of bikes. आपको मूव करना भी मुश्किल हो जाएगा। राइट, सो थोड़ी देर में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा और यही डिस्कस करना चाहता था गाइस कि मैं अपना दिन कैसे शुरू करता हूँ, हाउ आई स्टार्ट माई डे एंड हाउ आई टेक इट अप फ्रॉम देयर। आई रिमेन इन द ऑफिस टिल 4:15 और 4:30। आई स्टार्ट फ्रॉम द ऑफिस बाई 4:30 और तब मैं क्रूड कॉल्स भी देता हूँ और अपने क्रूड ऑयल ट्रेड्स भी लेता हूँ। सो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट गेटिंग यूज्ड टू इट, राइट। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता या फिर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, प्लीज़ रिमेंबर दैट एज आई ऑलवेज से, टेक्निकल्स ही सब कुछ होता है, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से पता है तो आप कहीं भी रहो, आपको कहीं भी छोड़ दिया जाए, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। टेक्निकल एनालाइज करने का, टेक्निकल एनालिसिस करने का, फिर एंट्री पॉइंट अच्छे से डिसाइड करने का, ट्रेड में घुसने का, एंड देन इट्स ऑल अबाउट मॉनिटरिंग। ओके, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस इन प्लेस होगा, आपने एंट्री ले लिया होगा, उसके बाद आपको बस मॉनिटर ही करना है कि किस तरफ जा रहा है स्टॉक। ओके, सो आई एम ऑलमोस्ट देयर at my office. I will go ahead and switch off the camera here. I'm not sure whether the security will allow me to take the camera inside or not, so I'll just go ahead and switch off the camera and I will see you all later. Okay, thank you so very much for all your time and patience guys, and I believe कि जो भी ट्रेडिंग और व्लॉगिंग का आइडिया मेरे में मतलब मैं सोचा हूँ, that goes good. Okay, and I will catch you up later. Thank you so much. Thank you so much for all your time and patience. And you have a good day ahead. Trade well, trade wise, and I will catch you all later. Thank you so much. Bye bye. Let me try if he's allowing me to go. All right, so he just allowed me. That's good enough. Obviously I will not be able to show the inside of my office. I would not like to do that because that is not in the rules, and it's better to follow the rules. At least I always follow the rules.